Hello students, today we are going to discuss liquids in motion and the most important part, the Bernoulli is here and the Torricelli is here. Okay, so first of all I am starting up with Bernoulli is here. बड़े ध्यान से देखिए बेटा, Bernoulli theorem क्या है? Let us suppose students, it is the pipe of variable cross section area. It is the pipe of variable cross section area, and through this pipe the liquid will flow from the end A towards the end B. This is the end A and this is the end B, and the fluid flow will be the streamline flow. Now since let us suppose say PA be the pressure exerted on the liquid at the end A and PB be the pressure exerted by the liquid at the end B. Now the area of cross sections, they are suppose say A1 and the area of cross section of the end B, let us suppose say it is A2. The liquid, it enters in the pipe with the speed V1 and it emerges out of the pipe with the speed V2. Got it? Now let us further suppose say that H1 be the height of the end A. H1 be the height of the end A of the pipe above the ground, and H2 be the height of the end B above the ground. Okay sirs? Clear? अब बेटा बर्नौली थ्योरम क्या कहते हैं, पहले इसको बड़े ध्यान से सुन लें. बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग सिर्स, अगर फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइंड है तो सिर्स द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो. ओके, तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये टोटल एनर्जी पर यूनिट मास क्या है? It is simply the sum of the kinetic energy per unit mass, potential energy per unit mass, and the pressure energy per unit mass. Got it, sir? Okay. पहले मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, नोट कर लें आप इसको. According to Bernoulli's theorem, in the streamline flow, the sum of kinetic energy per unit mass, comma potential energy per unit mass and pressure energy per unit mass is always constant at every area of cross section of the fluid flow. तो सिर्फ आपने पहले फिगर कॉपी करना है. इस फिगर में क्या है मैं बता रहा हूं आपको. फिगर में सिर्फ PA and PB they are the pressure. चलिए काम करते हैं, सब कुछ हमने 1 और 2 में लिखा है तो हम यहाँ पे 1 और 2 कर लेते हैं. Let us suppose P1 is the pressure exerted on the liquid at the end and P2 is the pressure exerted by the liquid which is emerging through the pipe at the end B. V1 is the speed with which the liquid is entering in the pipe and V2 is the speed with which the liquid is emerging out of the pipe. H1 is the height of the end A above the ground and H2 is the height of the end B above the ground. Now we had already considered the pipe of the variable cross section area, and A1 and A2 they are the area of cross section of the pipe at the end A and at the end B. Okay sirs? So sirs, first of all, what is it? This Bernoulli theorem is nothing but the principle of conservation of energy which is used in the fluid dynamics. Okay sirs? Okay, now let us suppose it, आपने figure copy करना. Let us suppose it, let us suppose say W1 be the work done per second on the liquid at the end A. So since this work done W1 is written as, say it is the force, say F1 multiplied with X1. Okay, क्लियर? अब बेटा वर्क डन पर यूनिट टाइम है, पहले इसको समझ लें. वर्क डन पर यूनिट टाइम है तो सिंस वी आर गोइंग टू से दैट इट कैन बी रिटन एज से x1 डिवाइडेड बाय द टाइम t. नाउ सिंस दिस x1, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट दिस फोर्स F1. This force F1 is written as say pressure P1
pressure P1 is written as, say, the force F1 divided by the area. Okay. So since this force F1 is written as, say, P1 multiplied with A1. Okay. And since this x1 divided by t, this x1 will be the distance covered by the liquid in the time t at the NA. Okay. So it will be simply equals to the speed v1. Distance per unit time is the speed. So we are going to place both these values over there. So this w1 is written as p1 a1 v1. Now the product of the area of cross section and the velocity, this a1 v1 is equals to, say, capital V, where this capital V is the rate of flow of the liquid. Rate of flow of the liquid means volume of the liquid per unit time flowing through the pipe. Got it, sirs? So since we can say that this W1 is written as, say, P1 multiplied with V. Okay, let us call this as the equation number first. तो पहले आप ये वाली कैलकुलेशन कॉपी करें. W1 is the work done. देखिए लिक्विड अपने आप तो पाइप के अंदर एंटर नहीं करेगा, लिक्विड को पाइप के अंदर एंटर कराया जाएगा. तो लिक्विड को जब आप पाइप के अंदर एंटर करा रहे हैं तो एनर्जी इज टू बी सप्लाइड टू द लिक्विड. द एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द लिक्विड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द वर्क डन ऑन द लिक्विड. Now W1 is the work done per second. याद रखें, work done per second. Work done per second on the liquid. Work done क्या होता है? Force into displacement. Okay. अब बेटा work done per second था तो displacement upon time हो जाएगा speed. Okay. Displacement upon time, that is x1 by t, it is simply equals to v1. तो ये work done per second हमने कैलकुलेट किया on the liquid at the end. तो पहले आप ये वाली कैलकुलेशन एक बार कॉपी करें. Now says, W2 is the work done by the liquid. Work done per second again. Work done per second by the liquid. At the end P. तो सर जैसे अभी आपने W1 कैलकुलेट किया था, बिल्कुल ऐसे ही हम W2 कैलकुलेट करेंगे. Now this W2 is again written as, say, force F2 multiplied with the distance covered x2 divided by time t. Work done per second, work done per unit time. Now says this x2 divided by t, it will be equals to the speed of the liquid with which the liquid is emerging out of the pipe at the end P. And says, say, P2 be the pressure, so it is written as, say, force F2 divided by A2, force upon area. So this F2 is written as, say, P2 multiplied with A2. Now we have to put these two values in the equation. So we get this W2 is written as P2 into A2 multiplied with V2. Okay. Now this product of area of cross section and the speed of the liquid, it is simply the rate of flow of the liquid. Now this A2 into, say, V2 is equals to capital V. It is the rate of flow of the liquid. Got it, sirs? So we can say that this work done W2 is written as, say, P2 multiplied with V. We are going to call this as the equation number second. Got it, sirs? Remember one thing, W1 was the work done per second on the liquid and W2 is the work done per second by the liquid. Clear? Now you have to note down this calculation. Yes, sir, done. Now we are going to calculate the net work done on the liquid. Okay, net work done per second on the liquid. So it will be simply equals to W1 minus W2. Now let us suppose say W be the net work done per second on the liquid.
net work done per second on the liquid. So this work done W, it is simply written as say W1 minus say W2. Now this W can be written as, it is P1 multiplied with capital V. Capital V is the rate of flow, minus P2 multiplied with capital V. It will be the net work done on the liquid, or the net amount of energy which is supplied to the liquid. Now this net amount of energy which is supplied to the liquid, it will result in the change in kinetic energy of the liquid as well as the change in gravitational potential energy of the liquid. Okay, now this work done W is simply equals to the change in kinetic energy of the liquid and the change in potential energy of the liquid. Now the change in kinetic energy of the liquid, it is simply final kinetic energy, that is half mv2 square minus half mv1 square. और याद रहे W वर्क डन पर सेकेंड है, तो यहां पर जो मास m हम यूज कर रहे हैं, it is the mass of the liquid that is flowing through the pipe in the unit time, that is mass per unit time. Now since the change in the potential energy of the liquid, it will be mgh2 minus mgh1. Okay, now we have to place all the three values in this equation. So we are going to say, चलिए एक काम करते हैं, पहले आप ये वाली कैलकुलेशन एक बार कॉपी कर लें. यस फ्रेंड्स, आई होप आपने कॉपी की है. Now says the net work done, it was say P1 into V minus say P2 into V. It is equals to the final kinetic energy half mv2 square minus say half mv1 square plus say mgh2 minus say mgh1. Got it sirs? तो हम एक काम करते हैं, सारा 1 एक साइड करते हैं और सारा 2 एक साइड करते हैं. So P1 into V plus half mv1 square plus mgh1 is equals to, it is P2 into V plus half mv2 square plus say mgh2. Okay, now what we are going to do, we are just going to divide the above equation on both sides by the mass per unit time of the liquid which is flowing through the pipe. So dividing on both sides by the mass m, P1 into V divided by the mass m plus half mv1 square divided by the mass m, mgh1 divided by the mass m, P2 into V divided by the mass m plus say half mv2 square divided by the mass m plus mgh2 divided by the mass m. Now this mass m is cancelled out. Okay sirs, and this mass which is written below this P1 V1 and P2 V2, we can say mass can be written as say P1 into V. It is written as say the density rho multiplied with the volume V plus half V1 square plus say GH1. It is P2 into say V divided by the density rho multiplied with the volume V plus say half V2 square plus say GH2. Okay sirs? Now this volume V is cancelled out. We are left with the pressure P1 divided by the density of the liquid plus it is V1 square divided by 2 plus say GH1 is written as say P2 divided by the density rho plus V2 square divided by 2 plus say GH2. Now take a look at this equation. Now this P1 divided by rho, it is the pressure energy per unit mass. V1 square divided by 2, it is the kinetic energy per unit mass.
and GH1, it is the gravitational potential energy per unit mass. Okay, now the sum of all these three energies per unit mass at the end A, it is at the end A. Again, P2 divided by rho, pressure energy per unit mass at B, V2 square divided by 2, kinetic energy per unit mass at B, GH2, gravitational potential energy per unit mass at B. Now it is the sum of all the three energies per unit mass at the end B. At the end B. Okay, so from it we can say, beta ये sum है, sum of pressure energy per unit mass, kinetic energy per unit mass and potential energy per unit mass, जितना end A पर है उतना end B पर है. So from it we conclude that the sum of pressure energy per unit mass, kinetic energy per unit mass and the potential energy per unit mass at every cross section area is always constant. Okay, so from it we can say that the pressure P divided by rho plus V square divided by 2 plus a GH is a constant. Okay, sirs? तो यहां पर P को क्या बोलेंगे? Thus P will be the pressure difference. Thus V will be the difference in the speed of the liquid, and thus H is the difference in the height of the ends A and B of the pipe. Okay, sirs? Clear? तो आप ये वाली कैलकुलेशन कॉपी करिए, एक बार मैं फिर भी इसको लिख के दे दूंगा आपको. तो स्टूडेंट्स यहां पर ये बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ है और ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से. इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से. तो P क्या है? P इज द प्रेशर डिफरेंस. P is the pressure difference between any 2 points during the fluid flow. Thus V is the difference in the magnitude of velocity of the liquid. Got it, sirs? And this H is the difference in the height of the end A and the end B of the pipe. Got it? Or you can say H is simply the difference between the heights of the two considered points inside the flowing liquid. Got it, sirs? And remember one thing important, अगर बेटा fluid flow horizontal हो, अगर fluid flow horizontal हो, if the fluid flow is horizontal, if the fluid flow is the horizontal, then the H will be equals to 0. H किस लिए 0 हुआ? जब fluid flow horizontal है तो कोई भी 2 पॉइंट्स जब आप कंसिडर करेंगे लिक्विड में तो उन दोनों के बीच में कोई वर्टिकल सेपरेशन नहीं है. तो इसलिए स्टूडेंट्स जो डिफरेंस इन द हाइट है ऑफ दोस टू कंसिडर्ड पॉइंट्स इज 0. सो इन दैट केस वी कैन से कि बेटा ये जो GH वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है, ये 0 हो जाएगा. So we can say that the pressure P divided by the density rho plus V square by 2 is constant. So from it we can say कि बेटा अगर कहीं प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पर वेलोसिटी पक्का कम होगा. प्रेशर ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, इसी का कन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा. ओके सर? So it is all about the Bernoulli's theorem.
Now we are going to discuss one important application of Bernoulli's theorem, and that is Venturi meter. This Venturi meter is nothing but a device which is used to measure the rate of flow of the liquid through the pipe. कोई भी लिक्विड जब पाइप के अंदर से फ्लो करता है तो कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है, इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द बर्नौलीज थ्योरम. सो दिस वेंचुरी मीटर इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. तो पहले आप ये वाली कैलकुलेशन कॉपी करें, फिर उसको डिस्कस करते हैं. Now, Venturi meter. देखिए बेटा, Venturi meter क्या है? It is simply the system of tubes. It is simply the system of tubes. बेटा लिक्विड इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट अस सपोज इट इज A1, और यहां पर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट अस सपोज इट इज A2. बेटा लिक्विड फ्लो करेगा इस सिस्टम से. आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहां पर लेफ्ट साइड पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, राइट साइड पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है. तो सिंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जब हम यूज करेंगे तो जब फ्लूइड का फ्लो होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब डिक्रीज होता है तो स्पीड लिक्विड का इंक्रीज हो जाता है. सो वी कैन से कि अगर पॉइंट ए पर इट इज द पॉइंट ए विच इज मार्क्ड, इट इज द पॉइंट ए विच इज मार्क्ड इन द ब्रॉडर एंड ऑफ दिस वेंचुरी मीटर, और यहां पर जो वेलोसिटी है दैट इज सपोज से v1, इट इज द पॉइंट से b व्हिच इज मार्क्ड इन द थ्रोट ऑफ द वेंचुरी मीटर. जो पतले वाला पाइप होता है इसको थ्रोट ऑफ द वेंचुरी मीटर कहते हैं. एंड द स्पीड ऑफ द लिक्विड इज से v2. ओके, तो सिंस जब लिक्विड फ्लो करेगा तो इन वर्टिकल लिम्स में लिक्विड राइज करेगा. ओके, अब वर्टिकल लिम्स में लिक्विड राइज कर रहा है तो बड़े ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज किया तो V2 is greater than V1. ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कंक्लूड किया. अब यहां पर अगर वेलोसिटी B पॉइंट पर ज्यादा है तो B पॉइंट पर लिक्विड का प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन दिस वर्टिकल लिम्ब, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन दिस वर्टिकल लिम्ब कम होगा. V1 is greater than V2, तो यहां पर पॉइंट A पर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन दिस वर्टिकल लिम्ब ये ज्यादा होगा. तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट विल बी ऑन द अकाउंट ऑफ द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन दीज टू वर्टिकल लिम्स. गॉट इट फ्रेंड्स? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज बर्नौलीज थ्योरम एट द पॉइंट ए एंड द एट द पॉइंट बी. ओके, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे. Now using Bernoulli's theorem, at A and B. तो पॉइंट ए पर बर्नौलीज थ्योरम यूज करें, आप देख सकते हैं कि फ्लूइड फ्लो हॉरिजॉन्टल है. सो वी कैन से दैट द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास एट द एंड A and the kinetic energy per unit mass at the end A is equals to the pressure energy per unit mass at the end B and the kinetic energy per unit mass at the end B. Okay, now we can say that the P1 divided by rho minus P2 divided by rho
is written as say V2 square divided by 2 minus V1 square divided by 2. Got it, sir? Now we can say this is P1 minus P2 divided by rho. It is written as say V2 square minus say V1 square divided by 2. तो P1 minus P2 क्या हो जाएगा? P1 minus P2 is the pressure difference. Okay? P1 minus P2 is the pressure difference at the end, at the point A and the point B during the fluid flow. Now this P1 minus P2, it is simply equals to H rho G. That is the pressure difference. ध्यान से देखिए, जो pressure difference है, it will be on the account of the difference in the height of the liquid column in these two limbs. And since this A1 V1 is equals to say A2 V2, it is equals to the rate of flow. Okay, the product of area of cross section and the speed of the liquid is always equals to the volume per unit time of the liquid which is flowing through the pipe. Okay, or simply the volume per unit time of the flowing liquid. So this capital V is the rate of flow. Rate of flow of the liquid. Got it, sirs? तो यहां से स्पीड V1 और V2 की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड की टर्म्स से कैलकुलेट की जा सकती है. So we can say that this V1 is equals to capital V divided by A1 and this V2 is written as say capital V divided by A2. अब ध्यान से देखिए, P1 माइनस P2 का वैल्यू यहां पर डालेंगे और V2 और V1 की वैल्यूज यहां से यहां पर पुट करेंगे. तो आप पहले वाली कैलकुलेशन एक बार कॉपी कर लें. Now we can say that this H rho G divided by say the density rho, it is equals to capital V. ऐसे कर लेते हैं, ये नीचे वाला 2 पहले साइड पे लिख लेते हैं. 1/2 V2 का स्क्वायर, it is say V square divided by A2 square minus say capital V square divided by A1 square. This rho is cancelled out, so it is twice of H into G. Twice of H into G is written as V square divided by A2 square minus V square divided by A1 square. So since this V square is made common and we are left with 1 upon A2 square minus 1 upon A1 square. Okay? Now, this V square can be written as A1 square minus say A2 square divided by A1 square multiplied with A2 square. Got it, sirs? It is twice of H into say G. Now, what we have to do? We have to calculate the expression for the rate of flow of the liquid, that is capital V. So, we can say that this V square is written as, it is twice of H into G, A1 square, A2 square divided by this A1 square minus of it is A2 square. Okay, now this V is written as under root of twice of H into G into A1 square into A2 square divided by this A1 square minus it is A2 square. Got it, sirs? अब इसको रिड्यूस करने पर आपको मिलता है कैपिटल V is written as say A1 A2 under root of it is twice of H into G divided by A1 square minus of A2 square. So since it is the required expression for the rate of flow of the liquid, the rate of flow of the liquid is very clear. It is calculated in terms of the area of cross sections A1 and A2 and the
difference in the height of the liquid column in these two vertical limbs. Got it, sirs? So, sirs, this is the calculation for Venturi meter. Copy it. Yes, sir, it's done. Now, since we are going to discuss Torricelli's theorem. The Torricelli's theorem, it can also be calculated on the account or using the concept of Bernoulli's theorem. अब ध्यान से देखिए बेटा, टॉरिसेल्ली's थ्योरम क्या कहती है। सिंस कोई भी कंटेनर है, let us suppose say it is the container and the liquid is filled in the container. तो बेटा कंटेनर के अंदर लिक्विड फिलअप किया है, और अगर इस कंटेनर की साइड वॉल पर आप कोई पिन होल बनाते हैं तो पिन होल को बोलते हैं ओरिफिस। तो सिंस ये जो लिक्विड है it will escape through this orifice. अब लिक्विड जिस स्पीड से निकलेगा that is called the velocity of efflux. अब बेटा जो ओरिफिस है, ओरिफिस का जो डेप्थ है, let us suppose say small h be the depth of the orifice below the free surface of the liquid, and we can say that h dash be the height of the orifice above the ground. और मान लेते हैं कि ये जो कंटेनर है ग्राउंड पर है, तो जब यहां से लिक्विड निकलेगा तो लिक्विड पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब करेगा, और यहां पर r will be the range of the liquid. तो सिंस रेंज की तो खैर बात बाद में करेंगे, पहले टॉरिसेल्ली's थ्योरम क्या है। टॉरिसेल्ली's थ्योरम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स को अकाउंट करती है। टॉरिसेल्ली's थ्योरम में वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ द लिक्विड थ्रू द ओरिफिस कितना होगा उसके बारे में बात की गई है। तो ध्यान से देखिए बेटा, क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द ओरिफिस, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अब आप क्या करने वाले हैं, आप किसी भी बॉडी का फ्री फॉल कंसिडर करने वाले हैं। लेट अस सपोज से स्मॉल h इज द हाइट, जहां से आपने बॉडी का फ्री फॉल कंसिडर किया। तो जब बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी, तो बॉडी जिस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ द लिक्विड थ्रू दिस ओरिफिस। मतलब हमने सिर्फ कंपेयर किया है, हमने क्या किया है, कंपेयर किया है। लिक्विड ओरिफिस से एग्जैक्टली उस स्पीड से बाहर निकलेगा which will be equal to the velocity or the speed attained by the body which is falling freely from the same height equal to the depth of the orifice below the free surface of the liquid. Okay? तो सिंस हमने काइनेमेटिक्स में किया है कि जब बॉडी का फ्री फॉल होता है तो जिस स्पीड से बॉडी ग्राउंड को हिट करती है वो हमेशा हाइट पर डिपेंड करती है, और ये जो स्पीड होती है इट इज √2gh. गॉट इट सर? ओके, तो सबसे पहले टॉरिसेल्ली's थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, आप नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू टॉरिसेल्ली's थ्योरम, द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ द लिक्विड थ्रू द ओरिफिस is equal to the velocity attained by the body falling freely from the height which is equal to the depth of the orifice below the free surface of the liquid. अब ध्यान से देखिए, पहले बर्नौली's थ्योरम को यूज करके हम टॉरिसेल्ली's थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो हम यहां पर पॉइंट ए कंसिडर कर रहे हैं और यहां पर हमने पॉइंट बी कंसिडर किया।
तो पॉइंट ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पॉइंट बी पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. सो यूजिंग Bernoulli's here at A and B, we can simply say at A the pressure energy per unit mass, P will be the atmospheric pressure divided by the density rho, plus it is half of VA square plus say GHA is equals to the pressure P divided by the density rho, क्योंकि atmospheric pressure जितना A पर है उतना B पर है, plus say half VB square plus say GHB. Got it, sirs? Now it is the sum of total energy of the liquid at the end A, the sum of the total energy per unit mass of the liquid at the end B. Now the pressure energy per unit mass is cancelled out. Now we are left with 1/2 of VA square plus say GHA is equals to 1/2 of VB square plus say GHP. Got it? अब ध्यान से देखिए, कंटेनर पर जिस समय यहां पर ये पिन होल किया गया उससे पहले तक तो लिक्विड रेस्ट पे था, तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट द एंड ए इट इज 0. The velocity of the liquid at the end A is 0, and the velocity of the liquid at the end B, it will be equals to V. Thus V is the velocity of a flux of the liquid through the orifice. मतलब velocity जिस speed से liquid orifice से बाहर निकलेगा. Now the height HA is simply equals to H, क्योंकि orifice जिस reference level पर है हमने वहां से height measure किया है, and the height HB it will be equals to 0, क्योंकि orifice जिस लेवल पर है उसको रेफरेंस लेवल हमने माना हुआ है. So putting these values we can say we are having GH is equals to VA 0 हो गया, VB it is 1/2 of V square plus say G into 0 हो जाएगा. Got it, sir? So we can say that we are left with this GH is equals to V square divided by 2. Now this V square is written as say 2GH. V square is equals to 2GH, and this V is equals to under root 2GH. So the velocity of a flux of the liquid through the orifice is exactly coming out to be equal to the velocity attained by the body which is swelling freely from the same height which is equal to the depth of the orifice below the free surface of the liquid. So since it proves the Torsell's theorem. Bernoulli's theorem important है 5 marks point of view से, Torsell's theorem important है 5 marks point of view से या 3 marks point of view से. Applications of Bernoulli's theorem में आपने सिंपल सा काम करना है, जहां पर प्रेशर ज्यादा वहां पर स्पीड कम. इसको आप उल्टा भी बोल सकते हैं, जहां पर स्पीड कम है वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, एंड वाइस वर्सा. ओके सर, तो ये आपका आज के लेक्चर में लिक्विड्स इन मोशन यहां पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में या तो जो डिलीटेड सेक्शन है हम उसको भी डिस्कस करेंगे या फिर डायरेक्टली हम थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे. ओके, सो इट इज ऑल फॉर टुडे.